Just let me know if I'm audible or not. Am I audible? Hello. Yes, you are audible. Yeah, Shabir. Okay. Okay. So So guys, should we start or wait for some more time? yeah, yes, yes, we are starting. We are starting. Okay. So guys, a very warm good evening to all the enthusiastic participants in this meeting and the speaker of today's session, Mr. Siddharth Nayak. So guys, today we have gathered here for the first session of the Mech Mastery. This is Abhishek Prajapati, the co-founder of Deathless Growth Community, and I welcome you all for this wonderful session. So this Mech Mastery is an incredible initiative which is taken by the Deathless Code community in collaboration with the MacBuddy. So in this today's session, we will be talking on the different subjects. Before all these things, I would just like you to give you a brief introduction about the Deathless Code community. So guys, this Dev Plus Code community was started a year ago under the vision of Mr. Raman Singh, who is the founder and director of this Dev Plus Code community, where we basically target to provide the students with the best mentorship and guidance in the different domains so that they can have a good roadmap and they can have a good career in the ITs. Till now, we have mentored more than 1,000 plus students across the different schools and the colleges. So in this MacMade Mastery session, we will be conducting with 10 different workshops on the 10 different days, which will be on the different domains like HR, social marketing, AIs, and entrepreneurship, and many more. And this will be conducted by the leads of the different organizations. So after the completion of this 10 days workshop on the different domains, you guys can apply for the internships. And coming to the most important thing, today's speaker. Today's speaker is the dynamic personality. I would like to introduce you and I would like to give you a brief introduction about Siddharth Nayak Jain. So Siddharth Nayak Jain is like he's a dynamic personality. He's having expertise in the different fields. By profession, he's a qualified chartered accountant with 5 years of experience in the finance, tax, and legal domains. And he's having expertise in the different fields like he's having expertise in the business strategy and planning, market analysis, and competitive intelligence, product development and launch, and many more. So, guys, I won't waste much time introducing himself. Okay, and I would like you to give you a brief introduction, like what we are having in this today's session. A very important note, like in this session, at the end we will be having a quick quiz, and the fastest answer will get a reward from our side, and it will be a surprise reward. So, guys, keep your belts tight, hold your seats, and be ready for this interactive session. Siddharth, sir, the meeting is yours. You can start. Thank you so much. Okay. Thank you, Abhishek, for a quick introduction. One question. I'm not able to start my video camera. I think it is disabled. So can you Okay, please okay. allow it? Yes, okay, okay. Yes, I am just checking. Aman, could you please check what is the problem he's facing? Also, the chat Yeah, option Abhishek. is also disabled. So we're just making the code so that you can share. Siddharth, sir, it is working now. No, I'm clicking on the start video. So it is showing that video is unavailable. The host or a co-host has turned off the start video option. Okay, okay. I think you need to enable that option, video option. Yes, yes, we are doing. Just give us a second, sir. Uh, ठीक है. Uh, Siddharth, sir, you will be seeing an option of share. Okay. You Share. just Okay, I clicked on share, became yes, presenter. okay, and you will be become presenter and you can start your camera. Okay. Is audio video visible now? Just give us a second.
Yes, it's visible. It's visible. It's working. It's visible. Okay. Okay. So now I have to share the whiteboard to explain something about finance. 1 second. So the screen is visible right now. Is the screen visible? Yes, it's visible. Yes, Okay. Okay, sure. So let's start off. Okay. So first, I will give a brief introduction about myself. So my name is C.A. Siddharth Nayak. Basically, I'm a qualified chartered accountant, having 5+ years experience in the field of finance, taxation, and legal. I have guided many startups and many businesses in the initial stage to the expansion stage. Basically all the things about the finance. I am specialized in the startup consultancy domain, where I usually give consultancy to the startups about how they manage their finances, legal and taxation part for their startup. Okay, so basically, since today's topic is particularly focused on finance, so I will be sharing some insights about the what is the important role of finance in the startup, how we can manage the finance in our startup. If you are planning to do a startup or already running a startup, how can you manage the finance in a better way? What are the key aspects or the important area which you need to remember or particularly focus about while doing your business, while running your startup? Okay. Also, I will be sharing some insights about if you are interested in making career in finance. So, what are the important areas which you can look upon, or if you want to do an internship in the startups in the finance domain. So, what are the key areas which you can search upon? So, basically, these are the things which we'll be discussing in today's session. Okay. So, let us start with a OneNote, a whiteboard. I will share you the important basic of finance in the startup. Okay, so basically the finance is 1 second. It's not working. Okay, I don't know, it's not working right now. I'm sorry, but I think there is some issue. I'm not able to open files in my laptop. Is my screen visible right now? Hello. no, sir, no, sir.
Okay. Is it visible right now? Yes, sir. Currently, Is yes. it okay? Okay, cool. So we are talking about finance today. So there are four important aspects of finance if you are looking in a startup. So first is accounting. Accounting is a very important aspect in every business or startup. Whatever transactions you are doing in your business, you have to keep record of the accounting records because it gives the idea about how much you are earning in your business, how much is your profit, okay, how much expense you are doing in your startup, and how much is your sales or turnover. So accounting is an important aspect which you have to particularly focus upon if you are doing any business or startup. Okay. Second is budgeting. Budgeting is another important concept which we have to keep in mind if we are running a business. What does budgeting mean? Anyone from the audience know about budgeting? What does budgeting mean? Anyone knows about budgeting? Please, you can answer if you know anything about budgeting. Have you heard budgeting earlier? Okay, so no problem. So budgeting means you have to plan about expenses and your income. That is called budget. जब हम अपने घर पे भी एक बजट बनाते हैं कि हमारी कितनी इनकम है, उसमें एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, ओके, और कितना हमें सेविंग करना है, तो ये सारी चीजें बजटिंग का पार्ट होती हैं. सिमिलरली जब हम एक स्टार्टअप या बिजनेस रन करते हैं, सो वी हैव टू मेक बजट. What is the importance of budget? Budget helps in keeping track record of our expenses, record of expenses, record of income, and how much we are expending in different areas. So budgeting helps in keep record of this thing. So in later stage we can fix those expenses. हम उन expenses को fix कर सकते हैं जहाँ पे हमने ज्यादा खर्च कर दिया है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बजट कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं. Okay, so budgeting is another important point in finance, particularly in startup or business. Okay, third point is cost analysis. We can also call as variance analysis. So what is variance analysis? So जितना भी हम खर्च कर रहे हैं अपने बजट में, एक्सपेंस जितना भी हम कर रहे हैं, उसका हमें कंपैरिजन करना है जो भी हमारा एक्चुअल हुआ है और हमारा बजटेड अमाउंट था, इसको हमें कंपेयर करना है. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट? जब हम इस चीज का कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल और बजटिंग, तो हमें रियलाइज होगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जितना हम जिसमें हमने एक्सपेंस किया है उसका हमें प्रॉफिट कितना रियलाइज हुआ है, किस हेड में एक्सपेंस करना हमारे लिए ज्यादा वर्थ है, किस हेड में हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है. तो ये सारी चीजें हमें वेरिएंस एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस से पता चलेंगी. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज फाइनेंशियल्स. फाइनेंशियल से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का. हमें प्रॉपर्ली अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है ताकि जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं हमारे बिजनेस के. व्हाट डज स्टेक होल्डर मींस? स्टेक होल्डर मींस जो भी हमारे बिजनेस से आउटसाइड पार्टी एसोसिएटेड हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक हमारा एक शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है, नॉट शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर. जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हम परचेज करते हैं या सर्विसेज अवेल करते हैं, जिनका पेमेंट हमको देना है, वो भी हमारे स्टेक होल्डर है. ठीक है, जिनसे हम रेगुलर वे में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. गवर्नमेंट हमारी स्टेक होल्डर है क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो भी एक स्टेक होल्डर हो गया. ओके, जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स को बाय किया है, वो भी हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं. डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं.
ओके, तो फाइनेंशियल्स हमें प्रिपेयर करना है ताकि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम उनको अपने बिजनेस के बारे में क्लियर एक इमेज दिखा सके, हमारे बिजनेस के बारे में कि हमारा बिजनेस किस तरीके से रन हो रहा है। इसके लिए फाइनेंशियल्स प्रॉपरली होना बहुत मैंडेटरी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, फर्स्ट हमने अकाउंटिंग का डिस्कस किया। जब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसमें हम प्रॉपरली वे में अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग करने के बाद हम उसका बजट बनाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि हमने कितना एक्सपेंस किया है, कितना हमारा एक्चुअल होना चाहिए था। प्रॉपरली हम उसको फाइनेंशियल्स में अपने रिकॉर्ड करेंगे, तब जाके हम अपने बिजनेस का प्रॉपर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुए। फर्स्ट अकाउंटिंग, इसको हमें प्रॉपरली वे में करना है। सेकंड बजटिंग, थर्ड कॉस्ट एनालिसिस, एंड फोर्थ फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है किसी एक स्टार्टअप का, वो इनके चार ये पिलर्स होते हैं। ओके, तो अब हम कोई भी स्टार्टअप अगर हम कर रहे हैं या फिर आगे जाके हम किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करने वाले हैं, एज अ हम एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे या हम एज अ इंटर्न ज्वाइन करेंगे, तो यही चार फील्ड्स होती हैं जहाँ पे हमको फोकस करना है। ठीक है, अब मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या फील्ड्स होती हैं कि हम स्टार्टअप में इन फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फाइनेंस रोल इन स्टार्टअप्स इन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो इस प्रेजेंटेशन में हम जो भी फाइनेंस के रोल्स होते हैं स्टार्टअप्स में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंटर्नशिप में या एज अ जॉब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, आपके उन रोल्स में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट, फाइनेंस रोल इन स्टार्टअप। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी भी एक स्टार्टअप में फाइनेंस का सबसे बड़ा रोल होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग में। First, strategic financial planning. So financial professionals play a crucial role in developing financial strategy. तो आपका मेन रोल हो सकता है कि आप स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हो। इसको हम सीएफए, आपने सुना होगा जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनमें एक सीएफए होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, सीएफओ। ओके, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का मेन रोल होता है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है बिजनेस के लिए और बजटिंग और कॉस्ट एनालिसिस को कंट्रोल करता है कि किस साइड में कितना एक्सपेंस हमारा होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग हम बोलते हैं इसको। सेकंड होता है फंड रेजिंग एंड इन्वेस्टर रिलेशन। ओके, सो फाइनेंस में इन्वेस्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप फंड रेजिंग और इन्वेस्टर रिलेशनशिप में अपनी अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हैं। एज अ फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट आप स्टार्टअप्स को गाइड कर सकते हैं फंड रेजिंग और इन्वेस्टर रिलेशनशिप के डोमेन में। ओके, थर्ड होता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको जो भी आपका स्टार्टअप है या बिजनेस है उसमें आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, उसकी रिपोर्टिंग करना है और उससे आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। ओके, नेक्स्ट, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। सो देखिए, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अगर आप सर्च करना है फाइनेंस की फील्ड में तो सबसे पहले आपको जो मैंने बेसिक चार कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग का, बजटिंग का, कॉस्ट एनालिसिस और फाइनेंशियल्स का। इनका अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप किसी भी स्टार्टअप्स को ज्वाइन करके इन डोमेन को हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको इनका एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा इनके बारे में इन चीजों को स्टडी करके किसी एक स्टार्टअप में आप इसकी इंटर्नशिप लेके इसमें आप इन चीजों को सीख सकते हैं कि किस तरीके से इन चीजों को मैनेज किया जाता है स्टार्टअप में और हाउ वी कैन मैनेज दीज थिंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप। ओके, सो आपको एक्सपीरियंस फर्स्ट। सेकंड, एक्सपोजर टू मल्टीपल फंक्शंस।
सो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो होती है फाइनेंस के फील्ड में, इसमें मल्टीपल फंक्शंस में हम काम करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टार्टअप को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो फंड्स भी अलग अलग तरीके से होते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी होता है, डेट होता है। तो ये काम जो सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होते हैं, उनका होता है कि इस स्टार्टअप्स को इक्विटी की तरफ मूव करना चाहिए या डेट की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस के लिए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ओके, थर्ड, नेटवर्किंग एंड मेंटरिंग। सो यू कैन नेटवर्क, आप जो भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को आप सर्च कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इंटर्नशिप को सर्च करेंगे। बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन फाइनेंस रोल एट स्टार्टअप। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग टू वर्क एज फाइनेंस रोल? फर्स्ट, रैपिड प्रोफेशनल ग्रोथ। फाइनेंस हर एक स्टार्टअप की पिलर होता है, हर स्टार्टअप की बैकबोन होता है, क्योंकि फाइनेंस को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर हमने फाइनेंस को प्रॉपरली अगर तरीके से मैनेज नहीं किया, तो बहुत सारे केस स्टडीज आपने सुनी होंगी स्टार्टअप्स की, कि स्टार्टअप्स स्टार्ट तो होते हैं, लेकिन ड्यू टू उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, या फिर प्रॉपरली वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी उनके पास रहता है उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो कैश बर्न बहुत जल्दी हो जाता है, उनका स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। क्योंकि फाइनेंस को मैनेज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, सो अगर आपने फाइनेंस की फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो आपकी रैपिड प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, ये एक बेनिफिट है आपके लिए। इक्विटी एंड रिवॉर्ड्स आपको मिलता है किसी भी एक स्टार्टअप में। अगर आप ज्वाइन करते हैं एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, तो आपको इक्विटी और बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बहुत लिक्विडेटिव करियर है ये फाइनेंस का। ठीक है। थर्ड, क्रॉस फंक्शन कोलैबोरेशन। फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सब डिविजन्स हैं। तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड से फाइनेंस में स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आप क्रॉस फंक्शनल वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्टार्टअप्स को ज्वाइन किया एज अ अकाउंटेंट। अगर आप सबसे बेसिक हम लेते हैं कि आपने एक ऐसा अकाउंटेंट, अगर आप किसी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहले आपने अकाउंटिंग फील्ड का पूरा एक्सपीरियंस आपने ले लिया, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड आपने पूरा देख लिया। उसके बाद देन यू कैन स्विच टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल। देन उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या उन चीजों में जा सकते हैं जिसमें आप स्टार्टअप्स को एडवाइस कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बजटिंग में आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं स्टार्टअप्स को, कि बजटिंग में हमें किस तरीके से मैनेज करना है। ओके, तो ये है। देन challenges and opportunities in startup finance. Now, what are the challenges? First, resource constraint. Finance के professionals are very scarce in the market. बहुत scarcity है फाइनेंस के प्रोफेशनल्स की, जो अच्छे फाइनेंस के प्रोफेशनल है। सो दैट इज अ चैलेंज एंड दैट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू वर्क इन दी स्टार्टअप फाइनेंस। नाउ, हाई अनसर्टेनिटी। Startup work in a very volatile environment, presenting financial professions with a unique challenges and opportunity. So आपके लिए स्टार्टअप्स के लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है फाइनेंस को मैनेज करने की। So you as a finance professional can work in a startups and give advice to them. So startups उससे बेनिफिट हो सकते हैं। थर्ड, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। नाउ आप फाइनेंस स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकते हैं इन दी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर डिसीजन ऑफ द स्टार्टअप्स। Okay, so these are the challenges and opportunities for you in the startup finance. Now, qualification for the finance role in startups. क्या क्या स्किल्स और आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए? फर्स्ट, फाइनेंशियल एक्यूमेन होना चाहिए, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया है कि इन डोमेन्स का आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इन डोमेन्स का अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा, देन यू कैन वर्क इन दी एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल इन दी स्टार्टअप्स। ओके, सो फाइनेंशियल एक्यूमेन होना चाहिए आपके पास, फाइनेंशियल एनालिसिस का, बजटिंग का, फाइनेंशियल मॉडलिंग का। ओके, एडेप्टेबिलिटी एंड क्विक लर्निंग होना चाहिए आपके पास, बिकॉज फाइनेंस में आपको डेली बेसिस में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। डेली हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आपका क्विक लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए।
ताकि आप चीजों को जल्दी सीख पाएं और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं, फाइनेंशियल डिसीजंस को आप प्रॉपरली टाइम पे ले पाएं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, कि आप टाइमली अपने डिसीजंस को ले पाएं। तो एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन टेक डिसीजंस ऑन टाइम बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन अवेलेबल। ओके, थर्ड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होना चाहिए आपके पास। फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, उनको इम्प्लीमेंट करना और एनालिसिस करना कि उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि हो सकता है आपके एक डिसीजन से बिजनेस को या स्टार्टअप को काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो फ्यूचर में। तो आपका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए आपके पास कि आप चीजों को जज कर पाए कि हमारे डिसीजन से स्टार्टअप्स में क्या बेनिफिट होगा, क्या कॉस्ट होगी स्टार्टअप्स को फ्यूचर में, किस तरीके से वो हमारे बिजनेस और स्टार्टअप को इम्पैक्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है ग्रो करने पे। तो इस चीज का आपको एनालिसिस करना है। हाउ टू सिक्योर एन इंटर्नशिप इन स्टार्टअप एंड फाइनेंस, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नेटवर्किंग और कनेक्शन बिल्डिंग से आप सर्च कर सकते हैं इंटर्नशिप इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप्स। टेलर्ड एंड रिसर्च एप्लीकेशंस को आप रिसर्च कर सकते हैं। शोकेसिंग रिलेवेंट स्किल्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास रिलेवेंट स्किल्स हैं, आप उसको शोकेस करके देन यू कैन एंटर इन दी स्टार्टअप एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सक्सीडिंग इन फाइनेंस इंटर्नशिप, प्रोएक्टिव लर्निंग होना चाहिए, सेंड फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए आपका। ओके, सो नाउ लेट अस कम, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सो यू कैन आस्क। हेलो, Am I audible? यस Uh, यस प्लीज so, आस्क। I have two questions. First question, how in ओके, startup VC or board of director can remove owner or CEO? First question was that. Second question, why venture capital is, uh, spends so much in uncertain startup for their equity? ओके, लेट अस टेक वन बाय वन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, व्हाट Okay. वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन Board अगेन? of board of director or outside investor can remove owner from his position. ओके, Uh, investor and outside person, how can they remove the directors? owner from his business. Like let's assume I open a business and someone else Okay, invest in my company. Uh, okay, but basically he is the investor. Okay, let's say in you know about OpenAI case where Sam Altman was removed from his position or fired basically. okay, Yeah. So how can okay, that happen? Like someone's board of okay, director. Yeah. okay, so आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए जितने भी ये केसेस होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, इसमें आपने सुना होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके एक वर्ड होता है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस? So if possible तो यू आप मस्ट बी इसको नो। इसको एलेबरेट कर दीजिए। आई थिंक मैक्सिमम लोग को आइडिया नहीं होगा ना, मेरे को है। अच्छा, नहीं देखिए मैं आपको बता रहा, जैसे रिसेंट में आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया ओपन एआई का जो केस था सैम ऑल्टमैन। रिसेंट में एक और एग्जांपल है आप सभी के सामने, जिससे आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, बायजूस का एक एग्जांपल है। बायजूस में रेगुलरली डिफॉल्ट हुए, कंपनी की साइड से पेमेंट्स के डिफॉल्ट हुए, एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे नहीं गई, जो भी उनने डेट रेस किया था, डिबेंचर्स रेस किए थे, डिबेंचर्स का टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली दिस कॉर्पोरेट कल्चर और दी लॉज रिलेटिंग टू द फाइनेंस और बिजनेस इन्वायरमेंट कम्स अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर पे आता है। तो अब आपका क्वेश्चन जो था कि हाउ कैन द आउटसाइडर पर्सन कैन रिमूव द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो वहां पे कुछ उनके रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, ठीक है, आप किसी इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, सो बेसिकली ही इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस एंड ही बिकम्स द इन्वेस्टर। नाउ यू हैव टू इशू द इक्विटी शेयर्स टू देम।
ओके, आपने उनको इक्विटी शेयर्स इशू किए, नाउ ही बिकम्स द ओनर अप टू दैट एक्सटेंट, जितना शेयर भी उनके पास गया उतने शेयर के लिए वो कंपनी के ओनर बन गए। अब होता क्या है, मान लीजिए कि एज अ डायरेक्टर अगर आप प्रॉपरली अगर डिसीजंस को नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप डिसीजंस को सही भी ले रहे हैं लेकिन इन्वेस्टर को वो चीज अगर पसंद नहीं है, तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि एज अ इन्वेस्टर आपके पास राइट होते हैं कि अगर आप मेजोरिटी शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो जो आपने एग्जांपल बताया कि सैम ऑल्टमैन वाज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो भी उनके इन्वेस्टर्स थे या आउटसाइड पर्सन थे जिनके पास शेयर होल्डिंग थी, शेयर्स थे, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें सैम ऑल्टमैन को कंपनी से हटाना है, कंपनी से रिमूव करना है। सो बेसिकली एज पर देयर लॉ, यूएस लॉ, उनके हिसाब से वो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग में थे जो इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने मिलकर सैम ऑल्टमैन को हटाया। सेम केस अपने यहाँ पे इंडिया में भी हुआ था। जो अश्नीर ग्रोवर की कंपनी थी भारत पे, सेम केस अपने इंडिया में भी हुआ था। वहां पे जो इन्वेस्टर्स थे या अश्नीर ग्रोवर के साथ के जो को फाउंडर्स थे, since they are also the shareholder, they are also holding the shares of the company, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर ने डिसाइड किया कि हमें अश्विनी ग्रोवर को पोजीशन से हटाना चाहिए और उन्होंने मिलकर हटाया। सो दिस इज पॉसिबल लीगली। जो आपने पूछा कि कैसे हटा सकते हैं, तो ये लीगली इस तरीके से पॉसिबल होता है कि मेजोरिटी शेयर होल्डर चाहे तो किसी डायरेक्टर्स को हटा सकते हैं, अगर कंपनी की वर्किंग, अगर उनको लगता है कि कंपनी की वर्किंग के लिए डायरेक्टर को हटाना बेनिफिशियल है तो। I hope you get your answer. Uh, Okay. So what was the second question? Question was about venture capitals and basically what is default? Like both are the question. Venture capital and default. Sorry, what is venture capital? Yeah, like venture capital and we see like who invest in your company and why are Okay. they, Why they continue? yeah, and why they are spending so much amount of money in your company. That was my basically just explain, please sir, just explain what is venture capital. I would say that is enough for me. Okay. So venture capital. Let me explain. This is venture capital. Venture capital is a person or a firm who collects the money from the different investor. Venture capital एक ऐसी फॉर्म होती है जो अलग अलग इन्वेस्टर से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिस्टर ए, दिस इज मिस्टर बी, दे आर द HNI पर्सन। सो वेंचर कैपिटल क्या करता है, इन लोगों से पैसा उठाता है, एक फंड्स का एक पूल बनाता है, अलग अलग लोगों से पैसा उठाएगा, फंड्स का पूल बनाएगा और एक डिफरेंट स्टार्टअप्स को सर्च करके उसमें इन्वेस्ट कर देगा। समझ में आया आपको? ये अलग अलग लोगों से पैसा उठाता है, ये एक फर्म होती है। ये पैसा जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, आपने मालूम होगा शायद आपको, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी सेम बिजनेस मॉडल पे वर्क करती हैं। अलग अलग लोगों से पैसा लेते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं और जो भी इनको लगता है कि स्टार्टअप्स वर्थ इन्वेस्टिंग है, उस स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट करती हैं, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करते हैं और प्रॉफिट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स से और बीच का इनका मार्जिन रहता है। तो बेसिकली हाउ द वेंचर कैपिटल बिजनेस रन। आई होप यू गेट योर आंसर। Yes sir. Okay, so you understood about the venture capital. Sir. Okay, and your why they invest in the business? They invest in the business to generate the profit, to multiply their investment value. लाइक अगर उनने फॉर एग्जांपल $1 million अगर इन्वेस्ट किया है, तो वो चाहेंगे कि जो उनका $1 million इन्वेस्ट उन्होंने किया है किसी भी स्टार्टअप में, वो बाय द टाइम उसकी वैल्यू को इंक्रीज हो और वो उससे अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। सो बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म क्रिएट फॉर टू क्रिएट वेल्थ of the HNI investors. So they create the pool of the money, which is called venture capital fund.
We call it as venture capital fund. Okay, In sir. short, VC. Yes, sir. Okay. So any other questions? Any other questions from anyone else? Sir, 1 second. If any of you have any questions, please just raise your hand. Hand raise कर लो आप लोग. Or if you want to understand some more insights, कुछ अगर आप लोग और भी समझना चाहते हो तो आप वो चीज बता सकते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. Guys, if you are having any doubt, you can unmute yourself. You can even raise your hands. We will provide you with the permission of mic. Even please check somebody has raised as the MS. Please provide him the access of mic. Prashant, raise your hand. MS. Actually, there are two Prashant Patel and Prashant Shah. Okay, I think no one has raised his hand. Sir, you can continue. Okay. So I will continue. ओके सो अभी मैंने आपको कवर किया कि फाइनेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. ओके देन हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया. अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से करियर होते हैं बेसिकली फ्रॉम योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स इन द फाइनेंस इंडस्ट्री. Okay, you have heard about CA, Chartered Accountant. Okay, I'm a Chartered Accountant, so you can also do the CA, CFA. Have you heard about CFA? Anyone? CFA? No? Okay, so this is Certified Financial Analyst. This is the full form of CFA. CFA का रोल क्या होता है? CFA का रोल होता है इक्विटी रिसर्च. इक्विटी रिसर्च का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा. इक्विटी रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का शायद आपने नाम सुना होगा. दीज आर द वेरी पॉपुलर टर्म्स इन द बिजनेस. हर बिजनेस में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इक्विटी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का. खासकर स्टार्टअप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वेरी पॉपुलर एंड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द इंडस्ट्री. सो these are the profile related to certified financial analyst. Okay, now there's another important in the finance sector जिसको हम strategic consultant advisor बोलते हैं. So what is the role of strategic consultant advisor? Basically जो प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना रिटर्न्स होगा, उसका ब्रेक इवन क्या होगा, कॉस्टिंग एनालिसिस वगैरह, वो सारी चीजें सर्टिफाइड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एडवाइजर के रोल पे प्ले करती हैं. सो बेसिकली these are the three things. These are all the professional courses. तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं सीए, सीएफए हैं, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट एडवाइजर के.
ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट है क्या इन कोर्सेज से रिलेटेड, सो आई कैन क्लियर एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। इन कोर्सेज से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट है या पूछना चाहते हैं तो पूछ Sir, सकता है। what's the difference between CA and a personal finance advisor? ओके, सो देखिए सीए जो होता है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। सीए बेसिकली, सीए का रोल जो होता है पर्टिकुलरली टैक्सेशन का होता है। ओके, टैक्सेशन एंड लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी करता है सीए, और सीए का मेन रोल जो होता है वो टैक्सेशन पार्ट में होता है, प्लस फाइनेंस में ये अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की तरफ गाइड कर सकता है। और जो पर्सनल कंसल्टेंट होता है या जो स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट एडवाइजरी होती है, बेसिकली उसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डोमेन होते हैं, बी इट इन द इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट, चाहे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो या फिर हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो, वो भी इसमें कवर होता है। प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। थर्ड, मर्जर एंड एक्विजिशन, शायद आपने यू नो, मर्जर एंड एक्विजिशन जो होता है वो भी इसी के अंदर पे आता है। मर्जर एंड एक्विजिशन फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है ए और दूसरी कोई कंपनी है बी, अगर ए कंपनी बी कंपनी को अगर एक्वायर करना चाहती है, टेक ओवर करना चाहती है, इस कंपनी को खरीदना चाहती है, तो हमें मर्जर एंड एक्विजिशन की प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो बेसिकली दीज आर द ऑल द बिग डील्स, ये सारी बिग डील्स होती हैं जो इसका पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट एडवाइजरी का। ओके, समझ में आया है आपको क्या डिफरेंस होता है? Yes, sir. One more question. Sir, पिछले लास्ट 2 इयर्स में लेट्स जो मेरे फ्रेंड्स के वो थे, फादर थे, उनकी किराने की दुकान थी एंड ही वाज स्ट्रगलिंग ऑफ मेंटेनिंग हिसाब, एंड ओके, उनका हिसाब, हाँ उनका हिसाब बहुत ज्यादा वो हो गया रहा, स्कैटर्ड हो गया रहा। हाँ, सो हु वाज द बेस्ट कि वो किसके से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि हिसाब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो गया रहा एंड ही डजंट नो कि किसको पैसा देना है और किसको लेना है, एक ये कंडीशन आ गई थी उनके पास। तो वो अपने फाइनेंस कैसे मेंटेन करते उस समय? देखिए उसके लिए जो आपने एग्जांपल दिया कि जो आपके फादर, सॉरी आपके फ्रेंड्स के जो फादर थे, उनका शॉप थी, तो अगर वो शॉप के अगर फाइनेंस को अगर मैनेज करना चाहते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, अगर वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अगर प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हैं और इस चीज का ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि कितनी उनकी इनकम हुआ उनके बिजनेस में, कितना उनका एक्सपेंसेस हुआ, नेट प्रॉफिट उनको कितना बच रहा है, प्लस जो पार्टियों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना हमें पे करना है, कितना हमें किस पार्टी से लेना है, बेसिकली दीज आर अकाउंटिंग कम्स अंडर द अकाउंटिंग। सो वो अकाउंटिंग अपनी प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उनको गाइडेंस लेना है सीए से। सीए विल हेल्प हिम इन मेंटेनिंग देयर प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट, ताकि वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाए और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली अच्छे से रख पाए, ताकि वो उस चीज का एनालाइज कर पाए कि एक्चुअल में कितना बिजनेस उन्होंने किया है, उनके बिजनेस ने उनको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ओके, सो आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, किसी और को कुछ फाइनेंस इंडस्ट्री में कैसे हम करियर बना सकते हैं या इंटर्नशिप से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो फाइनेंस में तो वो पूछ सकता है। ओके, नो वन? ओके, शुड वी मूव फॉरवर्ड?
हेलो, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, Uh, 1 second. uh, How sir, there was to a get question a in chat. Uh, like in chats में कुछ ना रहे हैं. okay, so can you please Yeah, yeah, sir. So the question ask was, the question? sir, how to get an internship by Ashneet in finance? I think he was saying. Okay, so how to get an internship in finance? Okay, to get an internship in finance, you have to look upon the businesses or startups which have opening in finance. सबसे पहले तो आपको उन businesses को ढूंढना पड़ेगा जिनके पास फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं. यू कैन सर्च इन लिंक्डइन, which is the best platform right now to search for any internship. सेकंड, आपको फाइनेंस में सबसे पहले तो आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी फाइनेंस में इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि फाइनेंस की बहुत सारी बड़ी वास्ट फील्ड है जैसा मैंने आपको बताया. और फाइनेंस में बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं. तो आपको सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान देखना है कि जिस इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या उन्होंने कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट आपसे मांगी है, या कुछ पहले का प्रायर एक्सपीरियंस अगर उनको रिक्वायरमेंट है आपका, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज क्या उनको रिक्वायरमेंट है. अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस अगर आप नहीं भी हैं, इंटर्नशिप है, आप फर्स्ट टाइम अगर ज्वाइन कर रहे हैं किसी कंपनी में प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सीखने के लिए, तो आपको ये देखना है कि क्या स्पेसिफिक एकेडमिक नॉलेज उनको रिक्वायरमेंट है. तो स्किल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपकी स्किल्स मैच हो रही हैं तो देन यू कैन श्योरली अप्लाई फॉर द फाइनेंस रोल. थर्ड, आप उसमें ये देखें कि क्या क्या चीजें आपको उसमें सीखने को मिलेगी, एरियाज विच यू कैन लर्न. बिकॉज फाइनेंस में जैसा मैंने बताया कि फाइनेंस के जो रोल होते हैं बहुत सारे रोल होते हैं, और उन सभी रोल्स में अलग अलग चीजें आपको सीखने को मिलती हैं. तो आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी जिस भी फील्ड में इंटर्नशिप के लिए आप जा रहे हैं फाइनेंस में, उसमें क्या चीज आपको सीखने को मिलेगी, और उस सेक्टर का या उस इंडस्ट्री का कितना ग्रोइंग मार्केट है, ये चीज आपको उसमें सर्च करना है. ओके, तो ओके, so I think one more person has asked question in the chat. Yes, sir. I would translate. Sir, currently pursuing my BTech. I'm planning to go in the finance field. Can finance and tech play a viral role if we have knowledge of both? That was the little go. I think he was asking, can a tech in finance can help us? Hmm. So yeah, he was So basically he is asking that if he has a knowledge of finance and taxation, that can help him to grow faster. if his Right. technology or technology knowledge Okay. can Hmm. come handy in financial field. Yeah, you can come in the financial field. But see, आपको सबसे पहले तो फाइनेंशियल फील्ड में जब भी हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी बेसिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीजें बताऊं, तो फाइनेंस में सबसे बेसिक पार्ट होता है अकाउंटिंग. अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉपर अगर अच्छे से आती है तो यू कैन गो अहेड एंड डू वंडर्स इन फाइनेंस. फाइनेंस में बहुत अच्छा काम कर सकती है हर फील्ड में, क्योंकि फाइनेंस में जितने भी सेक्टर हैं उनका बेस अकाउंटिंग ही है. तो सबसे पहले अगर आप स्विच कर रहे हैं, या फिर अगर आप आईटी सेक्टर पे हैं, और अगर आप फाइनेंस में अगर आपको इंटरेस्ट है फाइनेंस फील्ड में, और आप इस फील्ड में भी आगे करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग से स्टार्टिंग करना पड़ेगी. अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, देन यू कैन ग्रो बेटर. तो अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं या कोई जो टेक्नोलॉजी है, तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग पे फोकस करना है. अकाउंटिंग अगर आपका क्लियर होगा, देन आपको फाइनेंस में आगे जो भी फील्ड्स होंगी उसमें आपको चीजें समझने में, लर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और आप इन चीजों को इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि बेस अकाउंटिंग ही है फाइनेंस में पूरा. फाइनेंस एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फाइनेंस के सेक्टर में.
क्योंकि एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, जितने भी फाइनेंस प्रोफेशनल होते हैं, फाइनेंस की जो फील्ड होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि इकोनॉमी, मनी फ्लो जिसको हम बोलते हैं, कि पैसा जो आ रहा है उसका फ्लो किस तरीके से होगा और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे अलग अलग स्टेजेस में। तो वो चीज हमको समझना पड़ेगी, अकाउंटिंग और इकोनॉमी के थ्रू हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Another question was, sir, what is the scope of MBA finance student in finance field? MBA finance students, there's a very much scope of MBA finance student in finance field. जो भी सेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, जो मैंने पहले आपको गाइड किया था फाइनेंस में, ये तो प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे सीए बताया था मैंने आपको, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट एडवाइजरी मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट्स है, उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में जितने भी बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, दे आर ऑल्सो कम इन द फाइनेंस सेक्टर। तो यहाँ पे वेरी वास्ट अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। अगर आप प्रोफेशनल डिग्री नहीं है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, एमबीए फाइनेंस है, तो भी आपके लिए काफी ओपन मार्केट है। आप फाइनेंस में अलग अलग बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करके एक अच्छा करियर आप भी बना सकते हैं। अगर आपको ये जो बेसिक चीजें हैं फाइनेंस की, अगर ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हैं, फाइनेंस का अच्छा अगर आपका एक्सपर्टाइज है, बेसिकली फंडामेंटल अगर आपकी क्लियर है, तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं बाकी सेक्टर्स में भी, इन प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Rishika say, good evening, sir. What are the key person strategies and skills one should have for a startup or for better internship? What are the key, sorry, Uh, key Personal skills? strategies, personal strategies and or skills one should have for a startup or for better internship. Okay, so basically you want to do internship in finance, and you are she was asking about what are the skills that one should have. Okay, Uh, so Strategies. Uh, strategies. ओके, सो देखिए, जब भी आप स्टार्टअप्स में, अगर फाइनेंस सेक्टर में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो एक बेसिक नॉलेज और स्किल्स आपके पास होना ही चाहिए। उसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में अगर आप ये देखेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री अभी सबसे ज्यादा ग्रोइंग है, तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, शायद आपने सुना होगा कि अभी जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बूमिंग है फाइनेंस सेक्टर में, वो इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की इंडस्ट्री अभी सबसे ज्यादा बूमिंग है फाइनेंस सेक्टर में। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मींस स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की जो इंडस्ट्री है, वो अभी सबसे ज्यादा बूमिंग है। तो अगर मान लीजिए आपको अगर इंटर्नशिप अगर करनी है फाइनेंस सेक्टर में, तो बेसिकली आपको जो बेसिक्स नॉलेज है फाइनेंस की, वो तो आपको होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा आप फोकस करिए जो भी बूमिंग मार्केट है, जैसे अभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा बूमिंग मार्केट है, तो इसमें आप इसके बेसिक्स को लर्न करिए कि इसमें क्या बेसिक्स होते हैं, किस तरीके से हम इस सेक्टर में अपना करियर को बना सकते हैं। ओके, तो अगर आप बेसिक्स नॉलेज अगर आपका क्लियर होगा, बेसिक्स स्किल्स आपके पास होंगी, प्लस अगर आप को मालूम होगा कि अभी बूमिंग सेक्टर क्या क्या है, आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो करेगी फाइनेंस के अंदर, तो आप एक बेटर करियर ऑप्शन बना सकते हैं, बेटर इंटर्नशिप आप ले सकते हैं अपने लिए, और एक अच्छा करियर ग्रोथ रहेगा आपके लिए। ओके, सो आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। that's it. इतने क्वेश्चन थे. ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस आर कवर्ड, राइट? So, okay, I think we can wrap up now. Okay, anything from your side? Yeah, guys, if you are having any doubts or any questions, you can ask, because after that we will wrap up.
If you're having any doubts, you can raise your hands or you can type in the chat. Okay. So I think there are no more doubts. All the doubts are solved. Okay. I think all the questions have been answered. Okay. Thank you so much, sir, for such an amazing session. I hope the audience would Okay. have enjoyed listening to you and you have given valuable Okay. insights about the finance. Thank you so much for your Okay. precious time, sir. And I think Okay. we will. Thank you, Thank you Abhishek. so much, Thank sir. you very much. Okay. Thank you so much Bye. for joining, sir. And the audience, Okay. you have to wait for a while because we will be having a quick quiz round. So you have to wait, and we will announce the winners of the quiz in this meeting. Okay. So I can Aman, leave now, right? yes, sir, you can leave. Thank you so much, sir, for your precious time. Okay. Once again, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Okay. Aman, you can present the you can you can present the PPTs or the questions. As you have to wait for a while, till then we share the questions with you. Okay. I think I have already told you about the rule. The one who will answer the questions fastest, he will be the winner. Okay. So try to answer the questions in the minimum time you can. Okay. And we will be announcing you the winners in this meeting. So don't leave the meeting. Okay. And there will be surprise rewards for you. Okay. Hello, am I audible? Hello? Yes, Aman, you are audible. Okay. Just wait a second, guys. Is my screen visible? Yes, Hello? Aman, it's visible. Yes, it's Yeah. visible. Yes, Aman, This is this is QR code. Scan it and mark all the question and answer as fast as possible. Aman, please zoom the QR. What? Zoom. Yeah, zoom QR. Yeah, right.
गाइस क्वेश्चंस बन रहे हैं या 5 रिस्पॉन्स तो आए मेरे को अभी ओके फर्स्ट क्वेश्चन second question okay time's up guys okay time's up now going to announce the answers hello am I audible hello Yes, you are audible. Yes. yeah time's up this meeting okay now I'm going to announce the answers of all these questions. The first question is what financial metrics help assess the efficiency of startup in generating profit from its operating activities? So the answer is option D. Option D. Net profit margin. I think I have to open the sheet. Just wait a minute, guys. Okay. The first answer D by in very less time Avnish Anand Pathak. Okay. Second answer is um just wait this question. Second answer कहाँ हो गया answer thing is glitch. Okay. What is the term for the evaluation of startup before it goes public or receive significant funding? Okay. So answer of this question is option C. Option C. Pre-money valuation. And last question is in startup financing, what does the term seed round typically refer to? And the answer of this question is B. Early stage funding for product development. So we have to see like how many of you give the maximum right answers. First B, second C, and third B. First answer by Avnish Anand Pathak, second answer by Naved B and okay. So Abhishek, are you there? Hello. Abhishek. Aman Aman? Abhishek is not there. Actually, some issue, network issue. Okay, no problem. So I think we have to announce the winners. The winner is Avnish Anand Pathak. Hello. And the most correct answer by the named is Pragati Mishra. So our winner is Pragati Mishra. The most correct answer by her only. Congratulations, Pragati. हाँ कांग्रेस प्रगति गट फीलिंग में जाना चाहिए था मेरे भी सारे आंसर सही थे बस बीच वाला पता नहीं क्या किया मैंने So, Pragati, our team will contact you, okay, and they will ask you for your address and all so that we can parcel you the surprise gift. Okay. So, once again, congratulations to you. So, yeah, I think we can end the meeting. I think if it's done. Yeah, guys, like those who have doubt like how you get internship